Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to talk about MCQ questions on theorems, particularly on Thevenin's theorem, superposition theorem, maximum power transfer theorem, reciprocity theorem and Millman's theorem. So this part will help you to solve questions in GATE examination as well as to face some competitive examination. So this will give the platform how to solve the MCQ questions. So this is the question number 1. A law of superposition theorem can't be applied to non-linear network. Please be careful. Superposition theorem is applicable only for linear network. Okay. So that is the answer is correct. Non-linear. It is not applicable. Second, the Thevenin's voltage across AB. Okay, so how to find the voltage? We have to remove the load resistance. I have given find the current through AB or Thevenin's voltage across here. So it is removed. So you will get a new diagram like that. This is 1 volt, right? Or this is 5 volt. So current will flow in this way. What is the current is flowing? I equal to what? V upon R. V कितना है? V equal to 5 minus 1 because this is 5 volt, this is 1 volt. So potential difference is 4 divided by R is 5. So you will get 0.8 ampere. Now the 0.8 ampere is flowing in this way because this is higher potential, so current is flowing here. So here drop is there because current is going from higher potential to lower potential from here to here. So what is the potential lower side क्या आएगा? VOC इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं. ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, लोअर टू हायर, माइनस से प्लस मतलब लोअर टू हायर, इट इज ए वोल्टेज राइज 5. सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितना हो गया 5. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट प्लस से माइनस, हायर टू लोअर ड्रॉप, हायर टू लोअर ड्रॉप कितना 3 इंटू आई कितना है 0.8. So 2.4, 5 minus 2.4 is 2.6 volt, right? That is the answer, 2.6 volt, that is C. So in this way you can calculate the VOC, right? I am rubbing it. Okay. Question number 3. The current through 3 ohm resistance, here, resistance due to 2 ampere source, alone. This is the superposition theorem. When we solve the problem, we have to consider one source at a time. Remove the other source by their internal resistance. When you consider find the current through 3 ohm due to 2 ampere source, this will be removed by shorting it. Voltage source internal. Actually, we have to remove the other sources by their internal resistance. What is the internal resistance of this voltage source? 0. Ideally 0. So it is shorted. It is shorted. शॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा? दैट जो करंट आने वाला है यहाँ दो पाथ बनेंगे, दिस एंड दिस. सो दिस इज I1 निकालना है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? CDT अप्लाई करेंगे, करंट डिवीजन थ्योरम एट A. दिस इज पॉइंट A, एट पॉइंट A. सो क्या आएगा? टोटल करंट 2 इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 5, पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 5. दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट क्या होगा? हाफ हाफ हो डिवाइड हो जाएगा ना. अगर एनीवे 2 इंटू पैरेलल ब्रांच 5 अपॉन सम ऑफ दिस टू ब्रांच 5 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 एम्पियर. ये आंसर इज करेक्ट. और पैरेलल ब्रांच दो इक्वल ब्रांच हैं, दो इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है. एनीवे द करंट थ्रू 2 ohm रेजिस्टेंस, अगेन 2 ohm रेजिस्टेंस हियर ड्यू टू 10 volt सोर्स alone. So जब 10 volt सोर्स कंसीडर करेंगे, ओके, करंट थ्रो ऐसा आएगा डायग्राम.
10 volt, 5. This is the 10 volt source. This is replaced by shorting it. When you short it, करंट कैसे आएगा? 5 में करंट ऐसे ही फ्लो होगा. व्हाट अबाउट द करंट हियर? 0, बिकॉज यहाँ शॉर्ट हो गया ना. शॉर्ट होने से पूरा का पूरा करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा. शॉर्ट पाथ यहाँ से जाएगा नहीं, तो करंट थ्रू 2 ohm विल बी 0. सी आंसर इज करेक्ट. करंट थ्रू 2 ohm विल बी 0. हाँ, अगर करंट पूछा होता 5 ohm में तो क्या आता? 10/5, 2 एम्पियर. करंट यहाँ का 0, यहाँ का 0, लाइक दैट. ओके, आई एम ड्रॉपिंग इट. Okay, question number 5. The Thevenin's voltage across the load terminal AB. यहाँ पर Thevenin's voltage. They are asking Thevenin's voltage. Like that. This is 5 volt. This is 1 ohm. This is 2 ampere source. Or this is 1 ohm. This is the, we have to find VOC. Thevenin's voltage across these 2 points. Okay. ना ये बताइए, ये जो 2 एम्पियर जाएगा वो कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा ना 2 एम्पियर. क्यों? यहाँ तो ओपन है. इफ इट इज ओपन सर्किट, व्हाट इज द करंट हियर? 0, राइट? इफ इट इज ओपन सर्किट, करंट विल बी 0, सो 2 एम्पियर जाएगा. सो करंट ऐसा जा रहा है, मतलब दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल. सो VOC यहाँ से लेके ऐसा वोल्टेज क्या आएगा? बोलो. VOC इक्वल टू व्हाट? यहाँ से शुरू करो, यहाँ से यहाँ 0. क्यों? यहाँ से यहाँ तक 0. क्यों? करंट कितना है इधर? 0, ओपन है ना. सो इट इज 0. ओके, फ्रॉम हियर टू हियर प्लस से माइनस ड्रॉप. माइनस कितना? 1 इंटू 2 करंट जा रहा है, 2 एम्पियर. 1 इंटू 2. क्लियर? ओके, यहाँ आ गए. यहाँ प्लस से माइनस अगेन ड्रॉप, -5 इक्वल टू व्हाट? ये पॉइंट आ गया 0 इक्वल टू व्हाट? 7 वोल्ट. -7 या +7? 7 वोल्ट. स्टार्ट यहाँ से करोगे तो +7 आएगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो -7. आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन मैग्नीट्यूड, राइट? द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू आर in the circuit shown in figure. Okay, just tell me PL max equal to what? VOC square upon 4RL. Maximum power transferred. Same problem है? नहीं, 10 है. Okay, sir, this is open. First it is open. When it is open circuited, right? So VOC will be developed. What is VOC? VOC equal to what? VOC equal to 2 into I. Why? अगर ये ओपन है तो what is the current here? करंट यहाँ क्या होगा? 0. If this is open circuited, current through here 0. So this voltage or this voltage will be same. This potential of this point and this point will be same. मतलब VOC equal to क्या होगा? यहाँ का voltage difference, right? What is the potential difference here? 2 into I. So हमारा headache क्या है? I निकालना. What is the I? एक loop है. What is the I? I equal to what? 10/4. 2 plus 2 4. एक लूप है तो एक लूप में I equal to V/R 2.5 एम्पियर. So VOC equal to what? 2 into I. 2 into 2.5. 5 volt. Clear? So this is the way. If this is open circuited here, so current will be 0. So this voltage difference or here difference will be same. That is 2I. Okay. So you have to find I and then you can find VOC. Now RI. RI equal to कैसे निकालेंगे RI? For finding RI, how to find RI? This is 1 ohm. This is 2 ohm. This is 2 ohm. Okay. Okay. So this is 2. This is 2.
is happening? Okay, sorry. So for finding the VOC here, what we will do? This is the question number. Which one? Sorry, I'm solving the next question number. I think this question I was solving, right? Okay, so this is VOC, we got it. How to find RI? For finding the RI, remove all energy sources by their internal resistance. This is the voltage source will be replaced by shorting it, right? This is shorted. Now start कहाँ से करना है? This end से. कहाँ से start करना है? This end से. So this 2 ohm and this 2 ohm both are in parallel because both are connected at the same point. So 2 and 2 parallel, equal value in parallel, it is half. So 2 and 2 parallel, half, that is 1 ohm. So 1 and 1 parallel, sorry, 1 and 1 series, that is Ri equal to 2 ohm. For transferring the maximum power, RL equal to what? Ri equal to 2 ohm, right? For maximum power transfer condition क्या है? RL equal to Ri. Now what is a PL max? PL max equal to what? VOC square upon 4 RL, that is the formula. VOC square upon 4 RL. VOC square कितना है? 5 का square upon 4, और what is the value of RL? 2. So 25 upon 8. I'm just using 25 upon 8, 3 point something. Yes, C answer is correct. 3 point something. C answer is correct, right? Okay. Question number 7. Question number 7. The Thevenin's equivalent resistance for the network shown in figure. Thevenin's equivalent resistance. Okay. So whenever you are going to find the Thevenin's equivalent resistance, please here. You can see here. This voltage source के parallel में ये resistance है. Okay. So when you are going to find the equivalent resistance, we will replace all energy sources. So यहाँ क्या है? This is 1. This is 50. Okay. This will be replaced by opening it. This will be replaced by shorting it. Voltage source will be shorted, or this current source will be open. Now, if this is short, so this will be shorted. So what is the equivalent resistance between A and B? Equal to 1 ohm. 1 ohm. Clear? That is the answer. Equivalent resistance between A and B. क्योंकि ये short हो जाएगा, तो short हो जाएगा तो 50 will also be shorted. This is open, right? So only 1 ohm is there. ऐसा diagram आएगा, ऐसा, ऐसा, right? So it is 1 ohm. Ri equal to 7 का B answer is correct. 8. The Thevenin's voltage for the network shown in figure. Thevenin's voltage. Okay. So I'm going to make it Thevenin's voltage. How to find the voltage? Just tell me when you are going to find the voltage. So point A is there. This is B is there. 1000 volt, or this is okay. This is 50 ampere.
Can we make this diagram like that? Why? Because you can say this voltage source के parallel में resistance है. I told you already earlier, anything parallel with the voltage source, it is redundant. यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कुछ भी हो वो रिडंडेंट है. अगर आप इसको निकाल भी देंगे तो चलेगा. इट विल नॉट इफेक्ट एनी रिजल्ट. वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कुछ भी है, यू कैन रिमूव इफ यू वांट टू मेक द न्यूमेरिकल सिंपल. अब चाहो तो निकाल सकते हो बिकॉज इट इज रिडंडेंट और इट विल नॉट इफेक्ट एनीवे. तो इफ 1000 वोल्ट है, ओके. अभी ये 50 एम्पियर करंट ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे. तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इन दिस डाउनवर्ड. सो दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, राइट. सो आप चाहो तो यहाँ पर दिखा दिया आपने कितना आएगा. सो व्हाट इज VOC? VOC इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1000 वोल्ट राइज. क्यों? माइनस से प्लस. ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है. यहाँ से यहाँ क्या होगा? माइनस से प्लस, अगेन राइज. कितना कितना? 1 इंटू व्हाट? 50 एम्पियर. P इक्वल टू IR. यहाँ आ गए आप, यहाँ मतलब यहाँ आ गए, राइट. सो दैट इज अ VOC. कितना है? 1000 प्लस 50, 1050. आंसर ए इज करेक्ट. ओके. Question number 9. The Thevenin's resistance across A and B. Thevenin's resistance between A and B here. So ऐसा आएगा ना, 2, 3. This is A, this is B. All, when you are going to find the resistance between A and B, all sources are replaced by their internal resistance. But voltage source will be replaced by shorting it, ideal voltage source. So between A and B, so you can say we have point A here, B here. So 2 and 3 are in parallel. 2 connected between A and B, 3 is connected between A and B. So Ri equal to what? In Thevenin's equivalent resistance, 2 into 3 upon 2 plus 3, 5. 6 upon 5, 1.2 ohm. 1.2 ohm. C answer is correct. Question number 10. The value of R for maximum power transferred in the circuit is. Value of R for transferring the maximum power. R की value पूछी है for transferring the maximum power. Okay. So क्या, how to find the RL equal to what? R equal to RI. इसका मतलब हमको निकाल, this is the condition for transferring the maximum power. RL equal to R. So RI. So RI निकालना है. This is 5. This is 4. This is 20. Clear? This is RI between A and B. Clear? Current source will be replaced by open. इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा. Voltage source will be replaced by shorting it. How to find RI? We will start from this end. So this 5 and 20 in parallel. 5 into 20 upon 5 plus 20, that is 25. So you will get 4 plus whatever you will get, this and 4 series. So you will get answer is 8 ohm. Answer is 8 ohm. C is correct. Right? I am rubbing it. Okay. Next, question number 11. An impedance Z for maximum power transfer. So ZL we know equal to होता है complex conjugate of ZI. That is the condition for maximum power transfer. Complex conjugate का मतलब है ZL equal to complex conjugate of ZI. तो हमारा काम क्या है? ZI निकालना. ZI, how to find ZI? ZI निकालने के लिए this is, we have to find ZI between A and B. So this is 1 ohm. और XL इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L. ओमेगा कितना है? 1. L कितना है?
1 Henry. 1 into 1, that is 1 ohm. So we will write 1 or J1, XL J1 ऐसा आएगा. Voltage source will be shorted. So what is Zi? Zi equal to 1 plus J1. So ZL is the complex conjugate of Zi, equal to क्या होगा 1 minus J1. Complex conjugate मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस होता तो ये प्लस. So answer is 1 minus J1. That is the answer. Okay. Question number 2. The value of R for maximum power. Value of R for maximum power. Yes. Maximum power के लिए value of R क्या होगा? This will be shorted. This is 15. This is 20. This will be shorted. Clear? This is the value of Ri. For maximum power, RL equal to Ri. So Ri निकालना है. Ri मतलब you can say 15 and 20 both are in parallel because these 2 point 15 connect between this point and this point, 20 connect between this point. So 15 into 20 upon 15 plus 20, 35. 300 upon 35 upon 8.57 answer. Question number 12B. Okay. Now question number 13. Just wait. Question number 13. Find the value of R for maximum power. Find the value of R for maximum power. So this value we have to find. So how to find R? We will remove. This is 2. Sorry. 13. Okay. So how to find R? This is 2 ohm. 2 ohm. We have to find R between these 2 points. Voltage source will be shorted. This is 1 ohm. 5 ohm. Okay. Now just wait. This 10 volt जब आप रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा. Like this 5. Like this. So short मतलब 5 or 1 both will be shorted. Clear? So these will also be shorted. शॉर्ट के पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाएगा. शॉर्ट. So इसका मतलब you will get diagram like this. Two and two both will be in parallel. 2 connected and 2 here connected between. So equal value in parallel is 1 ohm. So answer is A. 13 का A, right? Be careful about it. It is लग रहा है बहुत difficult problem, but it is really very simple. Next, 14. The value of voltage VK. This voltage VK. If current through 5 ohm is 0. Current through 5 ohm is 0. अगर यहाँ करंट 0 है, कब 0 होगा करंट? जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो, या ये ओपन हो मतलब पोटेंशियल इक्वल है. इसका मतलब है आपको यहाँ का वोल्टेज और ये वोल्टेज VK ही है ना. ये यहाँ का पोटेंशियल VK है तो यहाँ शॉर्ट VK. सो VK निकालना है मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है, मतलब V1 निकालना है. आर यू गेटिंग इट? करंट 0 कब होगा? जब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो तभी करंट 0 होगा. इसका मतलब VK निकालना है तो मतलब V1 निकालना है. फॉरगेट इट. तो ये करंट 0 मतलब ओपन छोड़ दो आप. तो यू कैन मेक लाइक दिस. 10 volt. This is 2, this is 3, this is V1. ये ओपन. क्यों? करंट 0 मतलब ओपन. So I have to find VK. If it is open circuited, so VK equal to what? V1. क्यों? करंट
करंट जीरो कब होगा, जब इक्वल पोटेंशियल हो। तो आई हैव टू फाइंड V1। सो इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, व्हाट इज आई, 10/5, one loop, I equal to what, 10/5, that is 2 ampere. V1 equal to what, V1 equal to 3 into I, 3I, 3 into 2, 6 volt. So V1 equal to 6 volt. V1 और V के same, so 6 volt answer is correct. Is it clear? So it is very simple problem. अगर करंट जीरो है मतलब पोटेंशियल विल बी, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सेम है V1 और VK का, here and here. So VK निकालना मतलब V1 निकालना है. V1 it is very simple to find. 6 volt, right? Question number 15. The current through 4 ohm resistance. Okay. Current through 4 ohm resistance. Please here. Current through 4 ohm. Can we say this diagram equal to this diagram? 4, 8, 8, 8 volt, 4 ohm, 8, 8. Both diagrams are the same. I have to find the quantity here. और यहाँ का voltage क्या है, 8 volt. Can we remove it? Yes, we can remove it. I told you already. इस voltage source के parallel में ये है. If you want, you can remove it. It is redundant. Problem बहुत difficult दिख रहा था, but problem is really very simple. क्यों? इस voltage यहाँ अगर resistance होता इधर तो we can't remove it. लेकिन यहाँ potential यहाँ का 8 है, पहले भी था, निकालने के बाद भी 80 है यहाँ का पोटेंशियल. सो इफ यू वांट यू कैन रिमूव इट, इज रिडंडेंट. नाउ these two are in series. So what is the next diagram? 8 volt, this is 4, this is 4. What is I equal to 8/8, V upon R, 1 ampere. So current through 4 ohm is what, 1 ampere. B answer is correct. करंट थ्रू 8 ohm. अब ये बताओ, ये सेम प्रॉब्लम है, वो सेम प्रॉब्लम है, ये सेम. तो यहां से कितना आ रहा था, 1 एम्पियर निकाला ना हमने. यहां आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, इक्वल वैल्यू हाफ हाफ हो जाएगा. सो व्हाट इज द करंट थ्रू 8 ohm? 0.5 एम्पियर. राइट, सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ का करंट 0.5 दोनों का सम 1, लाइक दैट. ओके, सो आई एम रबिंग इट. Okay, next question number 17. The voltage difference between A and B. Voltage difference between A and B. Okay, so can I say voltage difference between A and B, V potential of A minus potential of B लिख सकते हैं क्या? Potential difference between A and B, VA minus VB, yeah, VB minus VA, whatever there, right? So VB, what is a VB? Can we say it is 8 volt? Yes. यहाँ ग्राउंड है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, 8 वोल्ट है ना. VB मालूम है, VA कैसे निकालेंगे? दिस इज वन लूप. व्हाट इज I इक्वल टू 10/V/R. कितना है R? 5. इन दिस लूप R इक्वल टू 2 + 3 5, सो 2 एम्पियर. VA इक्वल टू ये वोल्टेज कितना होगा, 3 into I, 3 into 2, 6 वोल्ट. So VA 6 है, VB 8 है, so what is the potential difference? 2 volt. Okay, potential of B is more than A. Correct answer actually. अब difference between A and B पूछा है तो it is 2 volt, right? The internal resistance between A and B. Internal resistance between A and B. जब आप internal resistance between A and B निकालना है तो this will be shorted. 2, 3, A, B. It is like that. Why? देखो ये 8 और ये 8 पैरेलल में है. ओके, सो कितना आएगा, 4. 4 and 4 सीरीज 8 हो जाएगा. 8 और ये शॉर्ट
यहाँ आएगा ना ये ऐसा 8 और ये पैरेलल हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ना, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, राइट। दिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 8 एंड 8 पैरेलल 4, 4 एंड 4 सीरीज 8, 8 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और ये शॉर्ट है ही, तो ये शॉर्ट ही है, राइट। तो एनीवे आई कैन लाइक दिस। So what is the answer? This is B2 short. Now these two are in parallel, so you will get A, B और ये आएगा these two in parallel, 2 into 3, 6 upon 5, 1.2. What is the resistance between A and B? 1.2. 8 का B 1.2. Okay. Okay, question number 19. For any arbitrary tree, the incidence matrix will be. पहली बात मैं आपको बता दूं, इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालना है तो सम ऑफ ऑल कॉलम्स विल बी 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, माइनस प्लस 0, प्लस माइनस 0। क्लियर? यहाँ प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस प्लस ये नहीं है 0, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट, दिस इज नॉट करेक्ट। ये 1 0 0, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, थर्ड कॉलम नहीं है, plus minus plus minus minus minus, this is also not correct, this is correct, A. You can see here, that is the first condition for incidence matrix, the sum of columns, all columns should be 0. So plus minus 0, plus minus 0, plus minus 0, plus minus 0, this A is correct, right? A answer is correct. Suppose n is the number of nodes in of a graph, then the corresponding rank hota है n minus 1, n minus 1, A is correct. Rank will be n minus 1, right? I'm rubbing it. Question number 21. For the tree of a oriented graph, the tie-set matrix is given by. Tie-set matrix का मतलब होता है, just I'm going to say, एक तो KVL लिखना है आपको, KVL, and second condition क्या है, chord is a reference. Chord is a reference. Clear? So this is the chord है, कितने chord हैं, this is the tree, कौन सा assume किया आपने, ये 2 4 और 3, 2 3 4 is a tree की branch है, twins हैं, और 1 और 5 chords हैं, so 1 5 is chord. Okay, so I am taking one reference and I am writing the KVL. So 1 2 3 both are, all are in the, so V1 plus V2 plus V3 equal to sum will be equal to 0. So direction same, so 1 2 3 all are positive, correct, this is correct. सेकंड के लिए 4 3 4 5 5 पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, 5 इज पॉजिटिव, 4 इज आल्सो पॉजिटिव, 4 is also positive, but 3 is in opposite direction. Okay, so it is negative. So this is correct. I don't know about this, but this A answer is correct. Okay. Question number 22. So I am rubbing it. Okay, next question number 22. Question number 22. The complete incidence matrix of a graph shown in figure is given by A. Now see here, this is the incidence matrix means what? यहाँ पर नोड आएंगे A, B, C, D. So this is A, B, C, D. A से कौन कौन सी ब्रांच इंसिडेंस है? 1 2 6. So 1 2 6, right? And if it is outgoing, question number 22,
if it is this, you can say 1 2 6 all are outgoing, it should be positive, but it is negative, so it is not correct. Question B, 1 2 6 positive, okay. At node B, 2 3 4 branches are incidents on that node 2, node B. So 2 3 4 आने चाहिए, 2 3 4 आ रहे हैं. 2 is negative होनी चाहिए because it is incoming. 4 is negative. So 2 and 4 is negative. 1 is outgoing. Sorry, 3 is outgoing. So 3 is positive, right? At node C, 4 5 6. 6 should be negative. 4 5 6 6 should be negative, right? 4 5 6. D, 1 3 5 होने चाहिए and all should be negative. 1 incoming, 3 incoming, 5 is incoming. Minus 1 3 5 incoming. So B correct. Okay. Question number 23. The theorem that enables a number of voltage current source to be combined directly into a single voltage or current source. It is a Milliman's theorem. If number of voltage sources are there, two ideal voltage sources of unequal output voltage cannot be placed in. Two ideal voltage sources of unequal voltages can't be placed in parallel. You can place in series, but you can't place in parallel. Similarly, two current source you can't place in series. Okay, so I'm rubbing it. Question number 25, the last question. The current through 5 ohm resistance due to 50 volt source alone. Again, this is the problem of superposition theorem. So when you considering 50 volt source, this is 50 volt, this is 5 ohm, 2 ohm, this is 3 ohm. This will be replaced by shorting it, right? So current through 5 ohm. What is the current through 5 ohm? Current यहाँ से कितने आएगा? 50 upon 5. I equal to what? V upon R. So it is what? 50 upon 5, that is 10 ampere. So B answer is correct. Okay. So this is over. I'm rubbing it. This is the answer sheet I have given. You can check your answer. Thank you. Thank you very much for listening me.